Welcome to Vision MBA guys, my name is Sneha and today in this video I'm going to discuss about the very important topic or a topic which I came across while discussing to the students or giving counseling to the students. There came some questions ki ma'am, when should I start my preparation for the CET examination, CET 2022, which is going to be somewhat in 2 months. And the second question which was there that a student asked me is, ma'am, should I exactly do my MBA right now or should I do it after my graduation? I'll complete my graduation and then after 1 year of experience I'll go for applying for an MBA and then I'll start my preparation. And the third question was, I want to do MBA but it is only because my parents want to do it, so should I just invest more 2 years and get it done, or I'm just playing with an idea of doing an MBA. So what exactly should I do? Now guys, these are the most common, these questions I've came across many times. So I thought I'll just make a video and just talk about it, that what exactly you should do and how exactly you guys can actually come up to a conclusion and make up your mind. Now I'm not saying कि यार हर student को MBA करना चाहिए, हर किसी को MBA ही करना चाहिए. That is the second thing. But then right now if you compare yourself or if you compare the corporate world with the MBA experience or the MBA exposure which is there, then the requirement is there. Why? Because now guys what happens is, अगर आप plain graduation हो, अगर आपने BCom किया है, BMS किया है, BFM किया है, name any degree, or if you have done an engineering and you don't want to continue with that same field or you want to explore something else, so that time MBA is an option where you can automatically change your field or your criteria of changing the specialization or the way you want to work further. Now for example, I have done BSc IT or maybe I have done my engineering and I don't want to go into those technicalities and everything, and I want to exposure the market of marketing, yeah, maybe HR. There can be changes. So that time what you can do is you can go for opting an MBA degree and automatically you get placed as per that convenience. You get groomed in 2 years for that and automatically the company hires you for that position because you are being groomed for 2 years during that MBA. So there is a shift of specialization of the criteria which you want. The second thing which I was saying in the first question was, right after the graduation should I go for preparation or should I jump into MBA? Now guys, we know that market में इतना ज़्यादा competition है, इतनी jobs की मारामारी है, हर किसी को एक skilled labor चाहिए या एक skilled person चाहिए और someone who can manage all the things and who is smart. Graduation nowadays only can teach you थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, या आपको सिर्फ वो बुक का नॉलेज दिया जाता है, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. देर इज़ नो मोर एक्सपोजर in the market or the way corporate worlds. Now what MBA does is it gives you exposure to various fields, the way you will be talking to people, you will be managing things, you will be exposing to various companies and people who are already in that field and have so much of knowledge. So MBA is giving you that idea or that way you can present yourself in a company. You become much more confident, the way you talk, the way you deal with people, the way you manage things. BMS, BCom ये सब करके आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज मिल रहा है, बात ख़त्म हो गई. MBA के टाइम पे आप क्या करते हो, जो 2 साल रहते हैं, यू गो फॉर इंटर्नशिप्स. फर्स्ट थिंग, कुछ ग्रेजुएशंस में, स्पेशलाइजेशंस में ये भी होता है, बट योर इट इज़ टोटली अ डिफरेंट आइडिया और डिफरेंट परसेप्शन ऑफ वेर यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल. सेकेंड थिंग, आपको यार दिन में या एटलीस्ट हफ्ते भर में आपके 5 से 6 प्रेजेंटेशंस होते हैं. उससे क्या होता है, यू स्पीक प्रॉपरली, यू गेन कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ एटलीस्ट 100 पीपल और एटलीस्ट 50 पीपल. आप सबके सामने बोल रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोजेक्ट बना रहे हो, सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन बना रहे हो. तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा एडअप करती हैं आपके कॉन्फिडेंस में. इफ़ सो गाइज द पॉइंट ऑफ telling this example and the way things happen in today's corporate world, you need to be aware. Don't just be कि यार हो जाएगा, कर लेंगे. Why have you done your graduation or why are we studying all this to get a good position in a company and to start the job which we want or to earn something at a good level? That's why we all are studying, we are slogging, we are doing every day, we are exploring new things. क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें? तो वो point of view रखते हुए always
कंसिडर कि यार आगे का क्या, वॉट आफ्टर 2 years, इफ़ आई एम अर्निंग आफ्टर अ प्लेन ग्रेजुएशन 10,000 और मे बी 15,000 और मैक्सिमम 20,000, आफ्टर 1 year, आफ्टर गेटिंग एक्सपोजर टू द कंपनी एंड एवरीथिंग, आई विल हैव टू अगेन आई गेट एन इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसमें 2,000 बढ़ेंगे, 3,000 बढ़ेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद एक और साल कर लिया, उसके बाद एक साल, बट आपका पोजीशन लेवल वो हर एक कंपनी में टाइम लगता है, दिस इज़ अ रियलिटी। ऐसा नहीं होता एक साल मैंने यार पूरी मेहनत कर ली, मैंने बता दिया आई एम अ वेरी परफेक्ट पर्सन हु कैन वर्क एंड आई कैन डू मल्टीटास्क एंड मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा भाई जो 20,000 का सैलरी था वो 40, this is not the reality. You have to slog every day, you have to work every day, that's how you get into the next position or the managerial level. यार यहाँ पे 2 साल MBA के कर लो, आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, द वे यू टॉक टू अ पर्सन, द वे यू एम्पथाइज, द वे यू एनालाइज थिंग इज़ टोटली डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि यार ये सारी स्किल्स पहले से ग्रेजुएट वाले बच्चे के पास नहीं होती है, बट राइट नाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड नीड्स MBAs, द पीपल हु कैन मैनेज डिफरेंट थिंग्स एट a single person can manage different multiple things. I know that if I'm a company and a plain graduate person comes to me or an MBA person comes to me, my more preference will be to him, even if I'm paying him more, because he is the person who will be working more efficiently. मेरा training cost बचेगा, as a company I'll think about these factors, plus he will be coming up with more such experience which a graduate is not having. So guys, consider, think about those things. ये वीडियो के बाद शायद से बहुत सारे, आई होप कि बहुत सारे जनों के माइंड में क्वेश्चंस आए कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एंड प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस गाइस। जब तक आप पूछोगे नहीं, लोगों से बात नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। जितने आप अपने आप में ही सोचते रहेंगे हाँ यार एक चीज़ हो जाए, फिर मैं सोच लूँ, फिर मैं कर लूँ, तो इट्स नॉट गोना हैपन। You all are young, you have time, you have so much of ways that you can explore the different areas of education or maybe degrees, या कुछ ऐसा करो जो which will benefit you. So don't just fall कि यार हाँ ग्रेजुएशन कर लिया अब क्या करूँ, तो ऐसे this is not the way you should be यार कि हाँ इसके बाद ये चीज़ करनी है, इसके बाद ये एक्सप्लोर करना। डाउट्स लाओ, मन में क्वेश्चंस लाओ, पूछो अपने मॉम डैड से, पूछो अब क्या जो है सिस्टर ब्रदर एनीवन हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग, आस्क देम हाउ द कंपनी वर्क्स, हाउ यू आर वर्किंग, हाउ मच इंक्रीमेंट डिड यू गेट, एंड नॉर्मली कजन्स है ये सब बता देते हैं। एंड टेक योर सेल्फ इन दैट पोजिशन एंड वॉट इज़ द स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड, आस्क योर सेल्फ दैट एंड टेक डिसीजंस एज पर इट. I hope this video made sense to students who are watching me right now and you're there till this video. So please press the like button, subscribe करो. हमारा Instagram पे भी एक account है, so you can follow us there. वहाँ पे भी काफ़ी information we provide regarding MBA entrance. And normally also if you have doubts, please do get in touch with us. We are not gonna say कि यार यही करो. Whichever is beneficial for you, do that, but take a better decision. That's what I wanted to conclude. And yes, please be happy, don't stop wearing mask because we never know, things can turn up other way around, and stay blessed, stay healthy. Thank you so much.